Chapter number 4th, Day 1, New Terminologies. Good morning, grade 4 students. Assalamu alaikum. I know that nowadays you are spending your more time at home, and I'm sure that you are missing your school friends and your school. Inshallah, your schools will be reopened soon. So, grade 4 students, Alhamdulillah, we have completed our 3 chapters, and today we have to start a new lesson. But before starting our new lesson, I would like to ask you few simple questions. Okay, so are you ready? That's great. So, grade 4, tell me, have you ever observed an animal, a bird, or an insect around you? Is it able to find food and water? Okay, fine. So, does it have a place to live? Does it have babies? So you must be surprised at why I am asking you these kind of questions. So today we are going to start a new lesson, and lesson is very interesting. And you know what is the name of your new chapter? The name of your new chapter is Environment. 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 And I know you know our routine that before reading any chapter, first we learn some new terminologies. Excellent. So today we will learn some new terms from the chapter Environment. So are you ready, guys? Excellent. So I will repeat one terminology 3 times, and then you have to repeat with me 2 times. Okay? So our first terminology is environment. 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 Okay, repeat with me, class. Environment. Environment. Good. Our next terminology is ecosystem. 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 Repeat with me, class. Ecosystem. Ecosystem. Our third terminology is producers. 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 Now repeat with me. Producers. Producers. Good. Our next term is primary consumers. Primary consumers. Primary consumers. Now repeat with me, class. Primary consumers. Good. Primary consumers. Excellent. Our next terminology is secondary consumers. Secondary consumers. Secondary consumers. Okay, repeat with me, class. Secondary consumers. Secondary consumers. And the next terminology is decomposers. 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 Now repeat with me, class. Decomposers. Decomposers. Okay, so these are our new terminologies. Now one by one I will explain you all. So our first terminology is environment. So do you know what is environment? The air, water and land in or on which people, animals and plants live. पानी, हवा और ज़मीन जिस पर लोग, जानवर और प्लांट्स जहाँ पर मौजूद होते हैं उसको क्या बोलते हैं? Environment. The air, water and land in or on which people, animals and plants live. So you can see in the pictures, you can see the picture of our environment. So the next terminology is ecosystem. So what is ecosystem? All the living things in an area and the way they affect each other and the environment. तमाम ज़िंदा रहने वाली चीज़ें जो एक एरिया में रहती हैं और वो एक दूसरे पर किस तरह से अफेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट पर, वो क्या होता है? इकोसिस्टम. सो यू कैन सी द पिक्चर हेयर. So our next terminology is
Producers. So what are producers? Plants, because they produce their own food. जो आपके प्लांट्स हैं वो क्योंकि अपने खाने का इंतज़ाम खुद करते हैं, अपनी खुराक जो है वो खुद से बनाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स. सो प्लांट्स बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन food. Okay, so the next terminology is primary consumers. Animals that eat plants or producers. वो जानवर जो प्लांट्स को खाते हैं या प्रोड्यूसर्स को खाता है. ठीक है, प्लांट्स जैसे कि आपको पता है कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो ऐसे जानवर जो प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स. गुड, प्राइमरी कंज्यूमर्स. तो आपको यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स की पिक्चर्स भी नज़र आ रही होंगी. आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स. एनिमल्स डैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स. ऐसे जानवर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाता है, जैसा कि आपने देखा होगा शेर जो है वो हिरन को खा जाता है, वो बकरी को खा जाता है. ठीक है, तो जो एनिमल्स को खाता है यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो खा जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सो हियर आर द पिक्चर्स. So the next term is decomposers. So decomposers क्या होता है? An organism that makes dead plant and animal decay. ये आपको नज़र नहीं आते, लेकिन ये जो आपने देखा होगा जो पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, या आपने देखा है कभी ब्रेड के ऊपर आपको फंगस नज़र आती है, तो वो क्या है? वो डीकम्पोजर्स हैं. डीकम्पोजर्स हैं. सो ये हमारी आज की टर्मिनोलॉजीज़ हैं. तो आज ग्रेड 4 आपकी असाइनमेंट ये है कि ये टर्मिनोलॉजीज़ आपने ख़ुद से बोलनी है, आपने इनको प्रोनाउंस करना है, और इनके बारे में जो भी आप बताएंगे वो आप अपने टीचर को भेजना है. उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप अपने टीचर्स को अपनी असाइनमेंट सबमिट करेंगे. इंशाल्लाह कल के दिन हम देखते हैं कि हमें क्या काम करना है. तब तक आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है. अल्लाह हाफ़िज़.